Hi, good morning, children. Today we will start with a new chapter in grammar, lesson number 14, relative clauses. जब मैंने clauses सिखाया था children आप लोगों को, then I had mentioned that adjective clause is also called a relative clause. So उस टाइम पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो we are going to learn about new a chapter that is relative clauses, or in short relative clauses are adjective clauses. तो adjective क्या करता है? It's a describing word, right? So relative clause tells us which person or thing or what kind of person or thing the speaker means. It is normally introduced by relative pronouns like who, which, that, whose, whom, and relative adverbs like when and were. तो इतना ध्यान रखना है कि आज हम एक्चुअली में पढ़ेंगे एडजेक्टिव क्लॉजेस. So now let us understand when do we use who in relative clause. We use who in a relative clause when we are talking about people and not things. हाँ children, हम सिर्फ इंसानों की बात कर रहे होते हैं. We talk about people, then we use who. We use it in place of he, she or they. Say for example, the last example, can you see? The people who live in big cities usually have an unhealthy लाइफस्टाइल. तो हमने पीपल जो बिग सिटी में रहते हैं उनकी मोस्टली यूजुअली अनहेल्दी लाइफस्टाइल होती है. सो वी हैव यूज्ड दिस रिलेटिव क्लॉज who here. Now is the usage of which and that. Exactly the opposite of who children. Who हम use करते हैं people के लिए and now we are using which and that only for things. So we use which or that in a relative clause when we are talking about things, not people. Say for example, where are the books which were lying on the table or that were lying on the table? Both are correct children. So which and that for things. Children, now let us understand when to omit who, which or that. आपको कब who, which or that लगाने की ज़रूरत नहीं है. देखो, try and understand that we must use who, which and that if it is the subject of the relative clause, and we will omit who, which and that if it is the object, then we can omit it. अगर who, which और that subject है तो ही हमें सेंटेंस में उसे यूज़ करना है. अगर वो ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है तो वी कैन ओमिट इट फ्रॉम द सेंटेंस. से फॉर एग्जाम्पल, द पुल ओवर विच सलोनी निटेड प्रूव्ड वेरी यूजफुल. तो यहाँ पर पुल ओवर इज़ द सब्जेक्ट. उसको रिलेट करके जिसे सलोनी ने बुना था वो वेरी यूजफुल प्रूव हुआ. So here which is very important. But the CD player I wanted to buy was beyond my means. देखो यहाँ पर ना which use हुआ है ना that use हुआ है. We can omit it. So here next case में भी the pull over Saloni knitted proved very useful. तो which यहाँ पर जो use किया गया था वो omit कर दिया है. सेकेंड केस में इफ़ यू वांट टू ओमिट यू कैन ओमिट इट. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हेन टू यूज़ whose and when to use whom. We use whose in place of his, her, their. जब हमें प्रोनाउन his, her, their के रिलेशन में कुछ यूज़ करना है तो वी कैन यूज़ द वर्ड whose. So say for example, we interviewed the candidate. His resume was the most impressive. So we interviewed the candidate whose resume was the most impressive. और whom कब यूज़ करते हैं बच्चे? Whom is used in place of him, her and them. Say for example, the official we approached couldn't tell us
much. The official whom we approached couldn't tell us much. In a relative clause, we can use where to talk about a place. Where itself shows कि place के बारे में कुछ बोल रहे हैं बच्चों. So it is used in place of there. So say for example, I long for a place I could get some peace of mind. So I long for a place where I could get some peace of mind. So it denotes place. नाउ चिल्ड्रन बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेटिव क्लॉजेस डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग अंडरस्टैंड करना. सो लेट्स सी बोथ द टाइप्स. अब टाइप 1 है आई एम लुकिंग फॉर द बॉय हु हैज टेकन अवे माई बुक. यहाँ पर हम एक बॉय को ढूंढ रहे हैं जिसने हमारी बुक ली है. दिस टाइप ऑफ क्लॉज इज नोन एज डिफाइनिंग क्लॉज. मगर अगर आप स्पेसिफाई करते हो आई एम लुकिंग फॉर संजय हु हैज टेकन अवे माई बुक, हियर हमने स्पेसिफाई किया है कि किसको ढूंढ रहे हो आप, संजय को, हु हैज टेकन अवे माई book. This type of clause is known as non-defining clause. And there are three important points to be remembered about defining and non-defining clauses. पहला तो we do not use commas with defining clause. Type 1 जो मैंने बताया था I am looking for the boy who has taken away my book, यहाँ पर कोई कॉमा हम कहीं पर सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे. But non-defining clauses are set off by commas. मगर सेकेंड एग्जाम्पल में I am looking for संजय, संजय के बाद यहाँ पर कॉमा डालेंगे who has taken away my book. This is known as non-defining clause and usage of commas. In defining clauses we can use that in place of who or which. हमने सीखा था ना कि who is used for persons only, मगर defining clause में आप persons की जगह पर भी that use कर सकते हो. Let's see an example. We are looking for someone who holds an MBA degree. यहाँ पर आप who की जगह पर that लगा सकते हो. But generally बेटा Indian English में we don't prefer that. हम generally we are looking for someone who holds an MBA degree ही लिखते हैं. अब in non-defining clauses we cannot use that. आशीष who holds a MBA degree. अब यहाँ पर तो clearly आशीष is a male person, you know it is a person. यहाँ पर आशीष that holds a MBA degree is absolutely wrong. We will stay at Samrat Hotel which serves only vegetarian food. यहाँ पर भी आप सम्राट होटल स्पेसिफाई किया है, टाइप 2 है. सो सम्राट होटल कैनॉट बी डिफाइंड विथ दैट. यहाँ पर भी आपको विच ही यूज करना पड़ेगा. देन इन डिफाइनिंग क्लॉजेस वी कैन लीव आउट who, which, that when it is the object. वो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं. बट इन नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस we cannot leave out who, which, etc. That's it, children.